Are you a NEET or JEE aspirant and afraid of giving tests? Then you're at the right place. Let me tell you a story of a person, and this will change your mind if you follow my wordings and just get determined to your goal. So there was a boy, and he was a nice boy. He was not that, who has gave up or in his early stage. So he was a nice boy and he used to study. So everybody gets this problem. Each of the institutes have this regular tests. So in his institute there was 2 tests in a week and 2 tests in a week. No. Every like syllabus wise test. First test and then second test after 2 days and then third test after 2 days, and that was of a particular chapter, let's say 3 chapters. Okay, and they also had a test every week. Yeah, every week. That was full syllabus test. So I'm talking about JEE. He was a JEE aspirant. So what happened, he also was not able to complete his syllabus and all before the test, and he only got 2 days to complete his syllabus of the test, and he also was not able to complete. That was pretty obvious. So what he did, that whatever chapter he did it very nicely. He did not attempt all the chapters for preparing. He did not prepare for all the chapters which are coming in the test, though he was a very nice student, very brilliant and very intelligent. So he used to study only 1 chapter. If there are 3 chapters, he used to study only 1 chapter and study it that well that he will not require to read the chapter again before the test. Just 1 day for the revision, and no more studying of that chapter is required. So what happened is, after every test he was like very sure of 1 chapter, that he knew that even if a hard question comes from this chapter, he will be able to attempt it. So what he did was this, and then through the test he was like completed. There was about 40 tests, so he completed 40 chapters. Let's say there are total 90 chapters, and then there was also a full syllabus test. Let's say he not let's say, that's a really true case, that's a true incident. He completed a chapter from the full syllabus test also, like 1 chapter, and the chapters which came in the revision test, like the chapters, like the selected chapters, they were also in his mind, and the full syllabus test was also given. So in this way he completed almost 80% of his syllabus, though he did not score well. Everybody were like, you're not scoring that well, that you should be. But he was like, his syllabus is getting completed, and these tests are not going to affect his career or his dream. So what he was doing, that he was getting better. His chapters were more and more getting nice. And then before the test we get 30 days. He got 30 days for the revision. It's just leave from the institutes and all. So in that period he completed 20% of his left syllabus, and that too he was a very nice student, I told you before. But there was some chapters which were left. Though there was some chapters which were left, let's say there are 5 chapters. I do not remember actually, but that was between 5 to 10. So he was left with those chapters. So he asked a friend of him. Who had completed those chapters which he did not complete. So he asked him that what are the topics that are really important. Just tell me those. I'll study that. Like not whole the topic. I'll not study whole the topic. Like 3 days before the exam, he asked his friends. He asked that what are the important topics from this chapter. So his friend told him that these are the important topics. You can read it. So his friend also told a formula of a particular topic, if there is an important formula, and he just said, just tell me 1 topic which is important from this chapter, just 1. So his friend told him, and he also studied, and his luck, just look at his luck. There was 5 chapters which was not completed by him, and 2 of the questions were from the topic which he had already studied through his friend's suggestion. So that is the case, and that is what I am trying to tell you, that
Do not skip tests. Keep giving tests, and do not get afraid of tests, because tests are very important. And if you are afraid that your teacher will scold you, then टीचर को कोई फर्क नहीं पड़ता है. अगर आप इंस्टीट्यूट में हो या फिर एक ट्यूशन में भी हो ना, तब भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता. उसके पास हजारों लाखों बच्चे आते हैं हर साल. वो हर एक बच्चे को अगर वो करने लग गया, एकदम अपने बेटा बेटे जैसा समझने लग गया कि भाई इतने गंदे मार्क्स कैसे आ गए, इमेज खराब हो गई, बिल्कुल भी नहीं. ये सब मत सोचो. टीचर को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता. टीचर को चाहे आपने कितने कितने करोड़ों पैसे क्यों ना दे रखे हो किसी इंस्टीट्यूट को, लेकिन टीचर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा. चाहे वो कितना ही अच्छा क्यों ना टीचर, आपको लगता होगा कि ये तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन उससे आपके मार्क्स से कोई फर्क नहीं पड़ेगा. हाँ, पेरेंट्स के लिए बात नहीं हो सकती है कि मतलब पहली बार ही मेरे बच्चे ने ऐसे जेई के लिए ऑप्ट किया है, इसके कम मार्क्स आ रहे हैं, अब क्या होगा. पेरेंट्स को हो सकता है, लेकिन वो भी आप जुगाड़ लगा सकते हो, मतलब आपको तो पता ही है. लेकिन नहीं, ऐसा मत करो. वो भी एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन होता है. और रही बात क्लास की, अटेंडिंग क्लासेस, सो क्लासेस कई कभार हैक्टिक हो जाती है, लेकिन ना जेई बहुत आसान है. मैं आपको सच्ची बताऊं ना, तो जेई बहुत ही ज्यादा आसान है अगर आप कंसिस्टेंट हो तो बस एक कंडीशन है, कंसिस्टेंसी. सो आप खुद नहीं करना. अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं कर सकते हो ना मेरी तरह, मतलब अपनी स्टोरी तो बिल्कुल नहीं बता रही क्योंकि मैं अभी सक्सेसफुल नहीं हुई हूँ. ऑल आई गेट मोटिवेटेड फ्रॉम माई टीचर्स एंड एवरीबडी. आई एम ऑलवेज सराउंडेड विद lots of like very intelligent persons, and all of my teachers are like IITians. So I think I'm capable of guiding you the way. So you can subscribe this channel for that. Okay. So what I was saying that classes, I was talking about classes. If you are, classes are really hectic. There are sometimes 5-hour classes every day, like whole 2 years. You have to, I'm talking about 11th and 12th, not the drop year. Whole 2 year, you have your classes 5 hours, and that is like 15 minutes break in the between. So that is sometimes hectic, but make sure that your class is meditative. What I am trying to say is that you're not affected by anybody in the class. You're not affected. As if you will study as if, yeah, if you were alone, then you would have asked that question. Do not get affected from the public. At that time, that will be a little bit awkward, and at the starting, it will be like very, very, very difficult. But by the time passes, you will get interchanged to a very nice student, though you do not study anything. Though you do not study anything at home. You just do it there only, and just revise it in the morning, just before coming. So you will be a very nice person if you convert your class to a meditative class. And what I wanted to say, one more thing. So my one of my sir told me, and the story which I told you was of an IITian. Let me tell you that. He is an IITian and he is currently teaching in my institute. So he is my teacher, of course, of chemistry. So yeah, I think that you can relate to that. And you have to convert your class into a meditative one. You have not to get affected by any of the public. Just अगर आप पढ़ना चाहते हो ना, तो प्लीज मतलब दोस्त मत बनाओ. मैं कहूँ ना तो दोस्त मत बनाओ यार. दोस्त बहुत खराब होते हैं यार. मतलब यार वो पढ़ने नहीं देते. अगर आप अच्छा पढ़ते हो और आपने किसी मतलब वीक स्टूडेंट को बना रखा है दोस्त, ताकि आपको थोड़ा ऐसा मोटिवेटेड फील हो यार कि मतलब मैं कर पा रहा हूँ यार ये तो नहीं कर पा रहा है, चाहे आप कितने भी गिरे हुए हो, लेकिन उससे अच्छे हो, तो आपको ऐसा लगता है ना कि मतलब कुछ ऐसे होते हैं टॉपर जो सारे बुड़बक बच्चों को ही दोस्त बनाते हैं. मैं भी उन्हीं में से हूँ लेकिन मैं जानबूझ के नहीं बनाती हूँ. मैं बहुत स्पेसिफिक हूँ फ्रेंडशिप को लेकर. मतलब मैं चाहती हूँ कि ना मैं एकदम ऐसी दोस्त बनाऊँ जो मतलब बहुत ही ज्यादा पढ़ने वाली हूँ. मैं मैंने वीक का बोल दिया क्या? नहीं, मैं अच्छी दोस्त बनाती हूँ, मतलब बहुत ही ज्यादा पढ़ने में अच्छी, ताकि मैं भी अच्छा पढ़ूँ. हाँ, तो मैं क्या कह रही थी, क्लास को मेडिटेटिव बनाना है. इससे क्या होगा ना कि स्टार्टिंग तो पीपल आपको ऐसे करेंगे कि यार ये तो अजीब ही है एकदम, मतलब कैसी है, मतलब कुछ मतलब सोच समझ के नहीं बोलती है, ऐसा लगेगा. लेकिन फिर आप ना सक्सेसफुल होके रहोगे अगर आपने ऐसा कर दिया ना. मतलब जी बहुत आसान है. बस आपको क्लासेस लेनी है रोज. अगर आप इंस्टीट्यूट में हो, किसी भी इंस्टीट्यूट में, किसी भी इंस्टीट्यूट खोला है तो पढ़ाएगा तो है ही.
तो जो भी पढ़ाएगा ना वो बस घर आके रिवाइज, और वो वाला चैप्टर तब तक रिवाइज करना, एक जो चैप्टर आपके इंस्टीट्यूट में चल रहा हो वो तब तक रिवाइज करना जब तक आपका उसका अगला चैप्टर कंप्लीट ना हो जाए। रिवाइज करना बस, याद करने नहीं बोल रहे, बिल्कुल याद मत करो, याद तो करो ही मत। अगर जेईई एस्पिरेंट हो ना तो बिल्कुल याद मत करना, बिल्कुल भी नहीं, फंस ही जाओगे पेपर में। नहीं होता याद भाई, जेईई एस्पिरेंट इसीलिए तो है, रट्ट तो होता थोड़ी ना है नीट की तरह। तो फिर यार याद मत करना और रिवाइज करते रहना, रिवाइज करते रहोगे ना तो फिर ना आपको याद हो ही जाएगा। और यार ऑप्शन है, टेस्ट में ऑप्शन आने वाले हैं, है ना, तो ऑप्शन आने वाले हैं, तो फिर अगर आपने किसी चीज को पढ़ भी लिया हो ना, एक ही बार पढ़ लिया हो और पेपर से पहले एक बार पढ़ लिया हो ना, तो फिर आपको ऐसा लगेगा कि यार ये देखा देखा लग रहा है, मतलब ये लग रहा है, आपको ऐसे लगेगा। वो जो इंस्टिंक्ट है ना उसी को आपको फॉलो करना है बस, और कुछ नहीं। क्योंकि यार ऑप्शन क्यों दिए जा रहे हैं, ऑप्शन का कुछ फायदा तो उठाओ। अगर आप एक चैप्टर लेके बैठ गए, जैसे मान लो एस ब्लॉक लेके बैठ गए और एकदम जैसे थ्योरी लिख के आनी है आपको पूरी, वैसे बैठ के रटने लगे, फायदा क्या है? आने वाला तो एमसीक्यू ही है ना, एमसीक्यू ही तो करना है आपको। एमसीक्यू करो तो फिर आप क्या करो, एक काम कर सकते हो, अगर आपको ऐसे रटना है तो फिर आप क्वेश्चन पेपर्स लेके करो, क्वेश्चन पेपर्स करोगे, फिर बाद में आपकी जो गलती होगी वो पता चलेगी, फिर वो गलती आप पेपर में नहीं करोगे। बहुत ईजी है यार, बहुत ईजी है। बस जो कंसिस्टेंट नहीं होता है ना वो फिर मार खा जाता है एट द एंड ऑफ द एग्जाम। सो बाय बाय, टेक केयर, एंड ऐसे पढ़ते रहो और फोड़ के आना।